अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें यू कैन सी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एंड देन रोलर कोस्टर, इस टाइप की सड़क पे मोशन, एंड देन टर्निंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड, देन बैंक कर्व, एंड देन दिस टाइप ऑफ मोशन डेथ वेल. So last में roller coaster and then turning off aircraft. So अगर if you have any problem in these applications, if you want to revise all these application in one lecture, then this is the right video for you. Okay. So first of all, I will explain horizontal circular motion, and this is the application of uniform circular motion. Over here you can see there is a mass M that is attached with a string. This is string, and this mass is rotating on this horizontal circular motion. Okay, this is the path of the circular motion. So you can see from here, this is string, okay, and the mass is rotating in this horizontal circular motion. So I hope you understand. So first of all, I will explain what are the forces acting on this object. You can see, first of all, the weight of this object, that is mg, that is acting vertically downward. And the other force is, you can see the tension in this string, that is acting in this direction. You know that tension is a pulling force, so that acts away from the object. So हम क्या करेंगे कि we will see कि what are the forces, which force is responsible for this object to move in the uniform circular motion. This is center of the circle. So we will resolve force tension that has some component along the horizontal direction. So this component is, if you consider this right angle triangle, this is a hypotenuse, this is base, and this is perpendicular. Then you can easily see the component opposite to this angle theta is, that is T sine of theta. And the other component is acting vertically upward, that is T cos theta. Okay, so this is the net force acting on this object, that is towards center of the circle, and this force and the weight of the object are being balanced. Okay, so the net force is T sine theta, that is equal to the centripetal force, you know that, mv square over r, and the other force T cos theta is being balanced by the weight of this object. So if you divide equation 1 by equation 2, you will get sine theta over cos theta equal to tan theta, and that will be equal to v square over rg. Okay, so you can see that v is, if you will increase v, then tan theta will increase. So you can do this demonstration at home. If you will increase the speed of this object, this angle will increase. Okay, so now I will discuss another application, that is vertical circular motion. Over here, the mass m is attached with the string, and that mass moves along the vertical circular path. Okay, so which force is responsible for the centripetal force? So let's discuss. Isme you can see the forces at this point are the weight of this object, and the other force is the tension. So if I want to write forces at point A, I will be writing the net force is inward force, forces towards center, that is T, and the force away from the center, that is mg. That should be equal to mv square over r. In circular motion, in uniform circular motion, net force must be towards the center of circle, and that net force over here should be equal to the centripetal force.
So I can say that tension over here is mv square over r plus mg. So tension is greater than, you can see from here that this factor, as you increase your speed, this factor will increase, so tension will increase. So tension is greater than weight of this object. Okay. So now if I want to find tension at another point, let's say I want to find tension at the top. So over here, you can see the forces acting at the top are, one is tension that is in the downward direction and other is the weight of this object, that is equal to mg. So if I want to write forces at point B, then both forces are acting downward. So tension plus weight is equal to mv square over r. We are assuming that the velocity of this object is kept constant. So tension over here will be equal to mv square over r minus mg. You can see that the tension is the difference of this factor and this factor. Okay. So if you want to compare these two tensions, then the tension at the bottom, at the top is smaller than tension at the bottom. Tension at the bottom is mv square over r plus mg, but tension at the top is mv square over r minus mg. So these two tensions, let's say this is tension at A, tension at B, these two tensions are different from each other. You can find the difference of these two tensions as well if you want to find. So now I will discuss tension at any other point. Let's say this is a point and let's assume this angle is theta. I want to find a relationship of tension at any angle. Okay. Now I want to find the general relationship of the tension. So over here, if you can see from this diagram, tension is acting towards the center of circle, and I will do, first of all, I will draw the forces, and the weight of this object is acting downward, that is mg. So the basic recipe is clear. The forces towards the center, that is T, and if you can see these two lines are vertical, then this means this theta, this angle must be theta. So I will resolve this tension mg, because mg has one component in the radial direction, that is mg cos of theta, and the other component of mg is acting in this direction, that is mg sin theta. So component parallel to the angle, adjacent to the angle is mg cos theta, and opposite to the angle is mg sin theta. So now you can see the force towards the center is T, and the force away from the center is mg cos theta. So we were assuming that the speed of this object is kept constant. So we are applying some external force to overcome this mg sin theta. So at this point, let's say this point is C. At this point, you can easily write the force inward is T minus force away from the center is mg cos theta, that is equal to mv square over r. Now this is the general formula of tension at any point plus mg cos of theta. You can derive tension at point A and tension at point B from this relationship. You can see when the object is at point A, जब A पे होगा, this point पे, the angle will be 0 degree. When the object is moving up, angle is increasing. At this point, angle becomes 90 degree. Then angle becomes 180 degree. Then 270, then 360 degree. So from this relationship, we can find tension at any point. So for A, theta is 0 degree, and cos of 0, you know, is 1.
So tension at point A will be, you can easily find. So from this relationship, we can say tension at point A is mv square over r plus mg. That is same as we did in this example. So tension at point B, the angle at point B will be 180 degree and cos of 180 degree is -1. So tension at B will be equal to mv square over r minus mg. Okay. So you can say, in other words, this is the general formula of tension at any point, and the maximum value of tension is the maximum value of cos. You can easily see is the 1. So maximum value of tension will be mv square over r plus mg, and the minimum value of cos is -1. So this is the minimum value of tension. So tension over here is maximum at this point, tension decreases and it becomes minimum at this point, then tension increases. So in this vertical circular motion, the tension is changing to so that the velocity of the object is kept constant. So in this third example, you can see we have this vertical track. Okay, ये हमारे पास, this is, we have a track and we have this object which is moving with constant velocity v. So we will see how the which forces are responsible and how the normal reaction force over here is changing. So first of all, let's consider this object at this point. Okay. So over here, the forces acting are, you can easily see, one is normal reaction force, that is R, and the other force is the weight of this object. So if I want to write forces at this point A, so then the normal contact force R minus weight will be equal to mv square over R. So normal contact force at this point A will be equal to mv square over R plus weight. So this normal contact force is greater than the weight of this object. If you will increase speed, this factor will increase. As a result, normal contact force at this point will increase. So your apparent weight, if you measure your weight by spring balance, it is equal to the normal contact force, and that weight is greater than your true weight. So let's say we are considering this object at this point at top of the track. Over here, two forces are acting. One is normal contact force and other is the weight of this object. Now the surface is like this, so the normal contact force will be in the downward direction, that is perpendicular to the surface. Okay ji. So at point B, let's say at point B, we will write forces is, one is normal contact force and other is weight. Both are acting in the downward direction and we are keeping the velocity constants. We are assuming that velocity is kept constant. So normal contact force at this point will be equal to mv square over r minus weight. Okay, that is the normal contact force at this point is smaller than the normal contact force at point A. Let's say we want to find the minimum speed at which this object will be able to move around the circular path. Then we will keep normal contact force at point B 0. So if this normal contact force at this point is kept 0, then we will get the limiting case for the velocity, and we will get mv square over r equal to the weight of this object, and so v square will be equal to rg. So that is the minimum speed. कि अगर speed इससे कम होगी तो object will not be able to move around this circular path. अच्छा, दूसरी important बात ये है कि if your speed is more than this value, तो you are scared to move on this circular path. क्योंकि speed ज़्यादा करेंगे तो normal contact force जो है that will increase. ठीक है, your contact with the surface will be stronger. इसी तरीके से you can find expression
ऑफ द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एट एनी अदर पॉइंट एंगल यूजिंग दिस कंसेप्ट। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप खुद इसको किसी और एंगल पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। द फोर्थ एप्लीकेशन इज कि हमारे पास इस तरह का ट्रैक है और इसके ऊपर अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी मूव कर रही है तो उसकी मोशन को हम स्टडी करेंगे कि इस पे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो बच्चों, लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग वेलोसिटी v एंड जब ये इस पॉइंट पे होगा तो देखें दिस इज पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, यू कैन विजुलाइज। सो ओवर हेयर, ये रोलर कोस्टर में भी होता है कि इस तरह के ट्रैक्स पे आपको इधर ऊपर जाना पड़ता है। सो ओवर हेयर फोर्सेस आप सोचें क्या लग रही हैं, वन इज वेट एंड अदर इज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। So force towards center is weight. Weight should be greater than normal contact force. Otherwise, net force will not be towards center and the object will not be able to move on this circular part. So weight minus R will be equal to mv square over R. So weight is equal to mv square over R plus this R. Okay. Sorry, we want to find हम R को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो आर ओवर एयर विल बी, इस आर को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस हो जाएगा डब्ल्यू माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से देखें बच्चों, यू कैन इजीली सी कि जी अगर आप स्पीड इंक्रीज करेंगे दिस फैक्टर विल इंक्रीज, सो डब्ल्यू माइनस दैट फैक्टर, सो आर विल डिक्रीज। ये इतनी साइंस आपको समझ आनी चाहिए कि वी इंक्रीज करने से आर डिक्रीज होगा और आपका सरफेस के साथ कंटेक्ट लूज होता जाएगा। सो एट सम स्पीड आर विल बिकम जीरो। तो वी वांट टू फाइंड कि जी मिनिमम स्पीड क्या है जिससे आर जीरो हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू एम जी एम वी स्क्वेयर ओवर आर। सो वी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू, इसको बच्चों सब्जेक्ट बना दें तो यू विल गेट वी स्क्वेयर इक्वल टू आर जी, या स्क्वेयर रूट आर जी कर देते। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड जब आप सरफेस के साथ कांटेक्ट में। इसके बाद स्पीड अगर आपकी इससे ज़्यादा हो जाएगी ना तो फिर आर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद जो है आप इस सरफेस से इस तरफ फ्लाई कर जाएंगे। सो अगर आपका स्पीड जो है इस आर जी से लेस है तो यू विल बी सिक्योर ऑन दिस ट्रैक। अगर आपकी स्पीड इससे ज़्यादा हो जाएगी तो आप इस सरफेस को लीव कर जाएंगे, यू विल फ्लाई। ओके, फिफ्थ एप्लीकेशन इज के हम हॉरिजॉन्टल रोड है आपके पास और इसमें एक टर्न आया है, तो इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि विच फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल टू मूव। अब देखें, दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग ए सर्कुलर मोशन ओवर हेयर एंड यू नो कि जी एक साइड वे फ्रिक्शन होती है, वो फ्रिक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अराउंड दिस सर्कुलर पाथ। ठीक है, टायर और रोड के बीच में जो साइड वे फ्रिक्शन है दैट फ्रिक्शन इज एम वी स्क्वेयर ओवर आर, एम वी स्क्वेयर ओवर आर, और फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स की एक अपर लिमिट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्पीड इस तरह होगी कि उस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू टर्न। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू टर्न। सो अगर आप स्पीड ज़्यादा करते जाओगे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती जाएगी और फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम लिमिट है, सो यू विल नॉट बी एबल टू टर्न। सो लेट्स से अगर एक थोड़ी सी आगे मैं बात करने लगा हूँ यहाँ पे कि यू नो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है, अगर आपने मैकेनिक्स पढ़ी है तो ये लिख देता हूँ, नॉट इन सिलेबस, A2 फिजिक्स में शामिल नहीं होगी ये चीज़, बट अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहें तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू आर, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। एंड नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स जो है ओवर हेयर इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अगर आप लगा दें एम जी that is equal to mv square over r, so that m will cancel out. So if I will make v as a subject of formula mu rg, so that is the maximum speed जिससे आप टर्न कर सकते हैं। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो होगा, नो फ्रिक्शन,
यू विल नॉट बी एबल टू टर्न। अगर आप रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वी मैक्स विल इंक्रीज। ठीक है, आपकी मैक्सिमम स्पीड अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि फिर आप बड़े सर्कल पे मूव करें, बड़े रेडियस के ऊपर मूव करें। अब देखें, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप टर्न करने की पोजीशन में नहीं होंगे, तो इसलिए जो है हम रोड को क्या करते हैं, के टर्न्स को हम इस तरह बेंड कर देते हैं, ठीक है, एंगल से। अब इस डायग्राम पे देखें बच्चों आप कि वी हैव दिस रोड एंड दैट इज इंक्लाइंड एट दिस एंगल। ठीक है, सो टर्न इस तरह होगा जैसे इस डायग्राम में नजर आ सकता है। ठीक है, सो ओवर हेयर सेंटर ऑफ सर्कल इज समवेयर हेयर एंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो है वो आपकी इस तरह लग रही है, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल, सो जिसकी वजह से वी विल रिजॉल्व दिस फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, दिस इज आर साइन थीटा and that is r cos theta. So r sin theta is providing the centripetal force and r cos theta is being balanced by the weight of this object. So अगर हम इस पे फोर्सेस जैसा कि मैंने आपको डिस्कस करा दी कि वन इज वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड वी विल रिजॉल्व दिस r। अब देखें, इफ दिस इज थीटा तो आप यू कैन इजीली फाइंड कि जी आपके पास ये भी थीटा होगा, ए इसका नॉलेज यूज करके ये भी थीटा होगा। अब लॉजिकली देखना है कि जी वेट को रिजॉल्व करना है या आर को रिजॉल्व करना है। वेट इज सेंटर इस मोशन का यहाँ पे है, सो आर का एक कंपोनेंट लग रहा है विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। तो हम क्या करेंगे, वी विल रिजॉल्व दिस आर। इस आर का एक कंपोनेंट है दैट इज आर कॉस थीटा एंड अदर कंपोनेंट ऑफ आर इज आर साइन थीटा। बच्चों देखो, आर कॉस थीटा बैलेंस हो रहा है किसके साथ, वेट के साथ। सो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, सॉरी, आर साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ओवर हेयर वी आर अज्यूमिंग कि कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, सो दैट्स व्हाई आर साइन थीटा इज equal to mv square over r. This is first equation, and second equation is r cos theta equal to mg. If you will divide this first equation by second equation, then you will get r sin theta over r cos theta, that is equal to mv square over r divided by mg. So that becomes बच्चों tan theta sin over cos is tan theta, mm कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो v स्क्वायर बाय आर जी। यू कैन सी कि आपकी जो स्पीड है मैक्सिमम स्पीड लिमिट दैट इज इक्वल टू आर जी tan theta. If I take square root, then I will get, so this is the maximum speed. If you will increase theta, tan theta will increase and your maximum speed limit जो है that will increase। ठीक है, इसीलिए जब आप एंगल को ज्यादा करते जाएंगे आप ज्यादा स्पीड से यू विल बी एबल टू टर्न, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी है। इसी का एग्जांपल हम दूसरा करते हैं, डेथ वेल। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस इज ए वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस पार्ट। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ओवर हेयर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड फोर्स इज वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट and upward force is friction force. Okay बच्चों, अब देखें, to force towards center is r, that is equal to mv square over r. This is the radius of circle. So अगर स्पीड आप इंक्रीज करते हो तो r will increase, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है आपको पता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होती है म्यू आर। ठीक है, दैट इज, अगर आपने मैकेनिक्स नहीं पढ़ी तो कोई ज़रूरत नहीं है बात याद रखने की, लेकिन जितना आपका कंटेक्ट फोर्स बढ़ता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बढ़ती है। सो इफ़ यू विल इंक्रीज द स्पीड योर फ्रिक्शन फोर्स विल इंक्रीज, तो फिर आप इस सरफेस के साथ कंटेक्ट में होंगे, अब आप नहीं गिरेंगे। अगर आपकी फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगी वेट से तो यू विल फॉल डाउन। तो इस तरह के ट्रैक्स पे चलना थोड़ा सा आपको वैसे डरावना लग सकता है, लेकिन अगर आपने फिजिक्स पढ़ ली है, ये लेक्चर ले लिए, तो अब आपको पता है कि जितनी स्पीड आप ज़्यादा करेंगे यू विल बी मोर सिक्योर, अगर आप स्पीड कम करेंगे तो फिर आपका जो है यू विल फेल डाउन। ओके।
अच्छा जी, आखिरी इसमें ये सिचुएशन करते हैं रोलर कोस्टर की कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हमने रिलीज किया है, दैट मूव्स इन इन दिस डायरेक्शन, और ये ट्रैक के इनसाइड मूव करते करते ऐसे, और ये अपना पाथ कंप्लीट कर लेता है। ऊपर इस तरह की डिस्कशन हो चुकी है काफ़ी हद तक, लेकिन इसको मैं अगर आपको थोड़ा फर्दर एलिब्रेट करूंगा कि जिसमें क्या क्या हो सकता है। ओके जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, वी विल यहाँ से हमने ये देखना है कि हमने यहाँ से रेस्ट से रिलीज किया। हम देखना चाहेंगे कि जी कितनी हाइट से इसको रिलीज करें कि ये अपना जर्नी कंप्लीट कर सके। अगर स्पीड कम होगी तो यहाँ से गिर जाएगा, थोड़ी और ज़्यादा होगी यहाँ से गिरेगा, स्पीड फर्दर ज़्यादा कर देंगे यहाँ से गिरेगा। अगर स्पीड आपकी ज़्यादा है तो फिर आप इस पाथ में अपना जर्नी कंप्लीट कर सकेंगे। सो लेट्स है कि जी ये बॉटम पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। वन इज़ वेट, अदर इज़ नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स। सो इस इक्वेशन को लिखना चाहें अगर आप, आर माइनस वेट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है, प्लीज याद रखना। इसमें देखें स्पीड यहाँ से बढ़ेगी, यहाँ मैक्सिमम स्पीड होगी, जैसे ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट आएगा स्पीड कम होगी, लीस्ट होगी एंड सो ऑन। तो इस गाड़ी का कोई इंजन काम नहीं कर रहा, ये फ्री फॉलिंग मोशन में है। इसलिए जो है ये प्लीज याद रखना कि दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारी कोर्स में शामिल नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन दिस इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, तो आई थॉट कि ये आपको बताने चाहिए। So R at this point is greater than the weight of this object. अच्छा, अब हम टॉप पे कंसिडर करेंगे R प्लस वेट एट दिस पॉइंट B। ये ऊपर डिस्कशन हो गई है बच्चों। R प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। स्पीड अब जो है ना कांस्टेंट नहीं है, तो इसको मैं स्पीड एट बी कह देता हूँ, आर एट बी। हम देखना चाहेंगे कि आर एट बी विल बी इक्वल टू एम वी बी स्क्वेयर ओवर आर माइनस एम जी। सो यू कैन सी कि जी अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, इफ़ यू इंक्रीज योर स्पीड, तो आपका आर बढ़ता जाएगा, आप सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। अगर एक सर्टन स्पीड है जिस पे ये फैक्टर इसके बराबर हो गया है, तो यूर आर विल बिकम ज़ीरो एंड यू विल not be able to move, or you will not be in contact with that surface. So let's say कि we want to find कि वो speed top पे क्या है जहाँ पे you are at critical position, that is equal to mg. So speed at b, that is the minimum speed, that is equal to rg under root. So minimum speed top पे अगर आपकी ये होगी r और g के स्क्वायर रूट के बराबर होगी, तो you will be able to move on this surface. अब हम देखना चाह रहे हैं कि कितनी हाइट से इसको रिलीज करें कि ये आप जर्नी कंप्लीट कर सकें। तो इसके लिए यहाँ की मिनिमम स्पीड पता चल गई है। बेसिक आइडिया क्या है कि टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट को इक्वेट करना है टोटल एनर्जी एट दैट पॉइंट, और हमने सरफेस को स्मूथ कंसिडर किया हुआ है। ठीक है। सो टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट स्टार्ट में बच्चों, टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, इस जगह पे टोटल एनर्जी इज एम जी एच, और टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज एम जी एच, यहाँ पे 2 आर होगा पोटेंशियल एनर्जी, प्लस 1/2 एम वी बी स्क्वेयर मिनिमम स्पीड। यहाँ मिनिमम स्पीड यूज करेंगे ताकि हम मिनिमम हाइट निकाल सकें। तो ये बच्चों बनेगा एम जी एच इक्वल टू 2 mg r प्लस 1/2 एम, और वी मिनिमम हम यहाँ टॉप पे निकाल चुके थे, दैट इज स्क्वायर रूट आर जी। स्क्वायर रूट आर जी का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बिकम आर जी। सो यू कैन कैंसल जी, एम जी आप कॉमन लेके दोनों साइडों से कैंसिल कर सकते हैं। ये देख लें इधर एम जी है, इसके साथ भी एम जी टर्म है, इधर भी एम जी है, तो कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ओवर हेयर यू विल बी लेफ्ट विद एच, और यहाँ पे 2 आर प्लस यहाँ पे r/2। सो एच मिनिमम विल बी इक्वल टू 2.5 आर। अगर 2.5 आवर्स से रेडियस के 2.5 आवर्स की हाइट से ड्रॉप करेंगे और सरफेस स्मूथ है, तो फिर ये मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
अदरवाइज वो पहले ही गिर जाएगा। अगर आप हाइट इससे ज़्यादा कर दोगे तो फिर आपके लिए, फिर आप सेफ होगे। सो एच शुड बी ग्रेटर देन 2.5 आर। तो ये याद रखना, अगर सरफेस स्मूथ ना हो फिर फ्रिक्शन फोर्सेस का भी इफेक्ट आपने लिखना है। टर्निंग ऑफ एयरक्राफ्ट, हमने एक एग्जांपल देखी, ये आपके पास देखें एयरक्राफ्ट है और इसने, ये सीधा जा रहा था ऐसे, इसने टर्न लेना है और इसका जो है वो सेंटर इधर है। अब देखें फोर्सेस को, अगर आप देखें तो ये लेफ्ट फोर्स है, टर्न लेने की वजह बताऊंगा, एंड अदर फोर्स इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब देखें इस लेफ्ट फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल बनता है, दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बनता है। तो इसलिए सेंटीपिटल फोर्स अगर फाइंड करनी होगी बच्चों हमने, तो हमें इसको, इसीलिए इसने टर्न किया है एंगल पे, सो दैट बेंड किया है कि वो अपनी मोशन को अपने आप को टर्न कर सके। दैट इज एल साइन थीटा, ठीक है, अपोजिट टू द एंगल, एंड द अदर कंपोनेंट इज एल cos theta. We are basically resolving this force. So you can easily see कि जी L sin theta is equal to centripetal force and L cos theta is equal to the weight of this object. इन दो इक्वेशंस को बच्चों डिवाइड कर लें तो यू विल गेट tan theta इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। अगर आपके पास स्पीड ज़्यादा है और आप टर्न करना चाह रहे हैं तो आपको एंगल ज़्यादा से बेंड करना पड़ेगा, ठीक है। tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज वाई द एरोप्लेन टर्न्स टूवर्ड, बेसिकली आपने आपको बेंड करने की क्या वजह है, अगर उसने सीधा जाते हुए यहाँ से सीधा जा रहा है और उसने अपने आप को राइट टर्न करना है तो वो इस तरह के एंगल पे अपने आप को बेंड करेगा, और अगर उसने लेफ्ट टर्न करना होता तो वो ऐसे इस डायरेक्शन में होता ताकि लेफ्ट फोर्स का एक कंपोनेंट इधर को लगता, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी सिचुएशन समझ आई होंगी और आपकी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू सो मच।